Hello dear students, let's see a new chapter that is motion in straight line. Also we can say that motion in one dimension, title is already written in front of you, motion in straight line or motion in one dimension. बच्चों ये काफी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर का नीट और जेडब्ल्यू में भी काफी वेटेज है, तो खास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर आप लेक्चर नोट्स अच्छे से मेंटेन रखिएगा एंड साइमल्टेनियसली एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा. यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं. और खास ये हम स्लोली एंड स्टडीली इंडिविजुअल पहले डेफिनेशंस देखेंगे और डे बाय डे विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट्स. एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, खास समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड लेंथी टू. हाँ, चैप्टर काफी लेंथी है, बट डोंट वरी एट ऑल. लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन. आज हमको सभी बेसिक डेफिनेशंस देखनी है. जो डेफिनेशंस अभी मैं एक के बाद एक आपको समझाऊंगा, उन डेफिनेशन की जो नोट्स है पीडीएफ फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मोशन. बिफोर स्टार्टिंग, व्हाट इज मोशन? Any object whose position is changing with respect to time. खास समझिए. Here is an object. Object is at rest. Okay. Object is stationary. Object is at rest. When this object is moving, we can say that object is in motion. When, I'll repeat the definition. When the position of an object is changing with respect to time, we can say object is in motion. Okay, initial this motion in one dimension, entire motion is said to be mechanics. अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं. मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. समझिएगा खास बच्चों, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन. ओके, मैकेनिक्स इज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली सुनिए और समझिए. जो मैं बोल रहा हूं वही सभी डेफिनेशंस आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी. आप केवल सुनिए डेफिनेशंस, ओके, और समझिए डेफिनेशंस. आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, उसमें से आप डेफिनेशंस खास लिखिएगा. अभी केवल सिर्फ वीडियो देखिए और एक एक डेफिनेशन समझिए. चलो, आई रिपीट द डेफिनेशन फॉर मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion. Okay, simple. Mechanics is divided in three parts. First is static. Static means object is at rest, no motion. Object at rest whose position is not changing with respect to time. Object is said to be static. Fine. Second is kinematics, then is dynamics. Kinematics, a branch of physics which deals with the study of motion. Kinematics में a branch of physics which deals with the study of motion without considering its causes and reason of the motion. I'll repeat, without considering the cause of motion. Without considering the cause of motion. While in dynamics, just opposite for it, along with considering the cause of motion. बच्चों ये दोनों डेफिनेशन अभी हमको और डिटेल में समझते हैं. चलिए, लेट मी टेक एन ऑब्जेक्ट. आई हैव एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट. देखिएगा, an object is moving with certain velocity. Object move हो रहा है with certain velocity. Fine.
क्यों मूव हो रहा है, किस तरीके से मूव हो रहा है, क्या फ्यूल यूज किया है, क्या एक्सेलरेशन, कोई पैरामीटर कंसीडर नहीं है इस काइनेमेटिक। फाइन। डायनेमिक्स, yes, object is moving, what are the type of fuel used, what is the velocity, what is the acceleration, what are the causes parameter। object move हो रहा है, सामने से wind flow है, yes, there are several hindrance parameter, friction force है, friction when the object is moving on the road, friction force लगता है। all such parameters when we take into consideration, then we move in dynamics। yes, I hope you are able to get the difference। when we do not consider parameters in the motion, normal motion है, causes of the motion नहीं consider किया गया, cause of the motion नहीं consider करते हैं, simple શબ્દમાં કહું કે કાઇનેમેટિક્સ એટલે કાંઈ નહીં consider કરવાનું। પાછું કહું છું, એકદમ સિમ્પલ શબ્દમાં કહું, કાઇનેમેટિક્સ એટલે કાંઈ નહીં consider કરવાનું મોશનમાં, એટલે કાઇનેમેટિક્સ, ડાયનેમિક્સ એટલે કરવાનું। સિમ્પલ વર્ડમાં કીધું। फिर से बोल रहा हूं, काइनेमेटिक्स मींस कुछ भी नहीं कंसीडर करना है, डायनेमिक्स मींस आपको कॉजेज ऑफ द मोशन कंसीडर करने हैं। यस ऑल ऑफ यू, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मोशंस। जो तीनों तीन डेफिनेशन है आपको पीडीएफ में मिल रही है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ motion. First, there is rectilinear motion or translatory motion। rectilinear motion, यदि मैं rectilinear motion, translational motion, both are quite similar motion only, both are same, but there is bit minor difference between them। Let's see what is the difference। I have a straight path on which object is placed। Okay, मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स F is applied, क्या होगा बच्चों? This object will perform displacement, object will move। yes, this straight line motion of an object is called rectilinear motion। straight line motion of an object is called rectilinear motion। okay, motion in straight line is called rectilinear motion। अभी translatory motion is again a straight line motion only, but there is a bit difference in it। इसमें part A, part B। translatory motion, समझिएगा बच्चों, मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं। आई हैव एन इंक्लाइन प्लेन विथ मी, ओके, इस इंक्लाइन प्लेन इज मेकिंग एनी एंगल थीटा। इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा गया। केस 1, केस 2 में यहां पे हमने डिस्क रखी, क्या होगा दोनों केस में बताइए, सोचिए जरा सोचिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, व्हाट विल हैपन? कंसीडर अ वेरी लेस फ्रिक्शन ऑन दिस एज। ये जो वेज रखा उसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा नहीं है, रखा है। यस, इट कैन मूव डाउन, यस, नीचे गिरेगा, देखिएगा, इट विल कम डाउन। यस, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, तो यहां से आप देखेंगे तो लीनियर मोशन दिख रहा है मुझे। दिस इज रेक्टिलिनियर ऑन अ स्ट्रेट लाइन होता है, यह ट्रांसलेटरी मोशन होता है। स्ट्रेट मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। यहां पे क्या होगा बोलिए? क्या ये डिस्क सीधी सीधी नीचे गिरेगी या रोटेट होगी? सोचिए। जो डिस्क रखी है यहां पे मैंने
सीधी ही आएगी। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंसी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यस, इट विल रोल डाउन, ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन, दिस ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन। दिस जो यहां पे है, कुछ समय बाद जब यहां पे आएगी तो ये जो सेंटर लाइन जो यहां पे दिखाई हुई है, लाइन विल मूव अप, यस, थोड़ा और रोटेट होगी, line will again move down, while finally when the disc comes, so it may move up again. It's rotational motion, ये translatory motion नहीं है। but एक बात खास ध्यान से सुनिए, एक बात खास ध्यान से समझिए, object is performing rotational motion, समझिएगा, object is performing rotational motion, but what about the center of mass? आप सेंटर देख सकते हैं, सेंटर देख लीजिए, सेंटर इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन, सेंटर स्ट्रेट लाइन में मूव है, गेटिंग द डिफरेंस? सुनिए, ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन बट इट्स सेंटर इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेटरी मोशन, सेंटर जो है ट्रांसलेटरी हो रहा है। यस, लिख लेता हूं, लिख देता हूं मैं आपको, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन बट सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स ट्रांसलेटरी मोशन। फाइन, बहुत ही सिंपल है। चलो हम देख लेते दो और प्रकार के मोशंस, दो और प्रकार के मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड साइमल्टेनियसली ऑसिलेटरी मोशन। Student, let's see the next type of motion, which is circular motion and rotational motion. Circular motion, बस एक सिंपल बात बता, in layman language में circular motion, rotational motion, they have quite bit same meaning only, but there is minor difference in it. There is bit minor difference in circular motion. Center is fixed, okay, along the center on a circular path an object is moving, this object is moving, okay, path is circular, object moves on a fixed path, has a fixed radius r. This type of motion is called circular motion. This type of motion is named as circular motion. Object is performing circular motion. Fine. What about rotational motion? In rotational motion, object has fixed axis of rotation. Object has fixed axis of rotation. जिस रूम में आप बैठे हैं अपने घर पे, ऊपर देखिए, पंखा दिख रहा है आपको? हाँ तो बोलिए आप। फैन दिख रहा है? फैन, इन फैन देयर इज फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस वहां पे फिक्स होनी जरूरी है। इन रोटेशनल मोशन एक्सिस इज कंपल्सरी। अगेन पार्ट ए, पार्ट बी, देखिए अपना फैन, देखिए, दिख रहा है फैन घूम रहा है। रोटेशनल मोशन, फैन ड्रॉ कर रहा हूं, सीलिंग फैन है, मान ही लीजिएगा फैन है। आई एम अ फिजिक्स टीचर, नॉट अ ड्राइंग टीचर। द ब्लेड्स ऑफ रोटेशन,
अभी ये blades will rotate about a fixed axis. This is my axis of rotation. Blades are rotating about a fixed axis. ये axis fix हो गई मेरी. Yes, blades are rotating about a fixed axis of rotation. ये हुआ rotational motion. Fine. Next, third is oscillatory motion. Third is oscillatory motion. Let's see. Let's understand oscillatory motion with some examples also. In oscillatory motion, I'll first consider pendulum. Yes, in pendulum, when you apply the force, it will perform the oscillatory motion. First of all, it will move in this side, part number 1. It will come back, part number 2. Go on left hand side, part number 3. Come back to origin, part number 4. Fine. This is my oscillatory motion. When the object performs the motion back and forth, to and fro, up and down, such a type of motion are called oscillatory motion. I'll show you some more examples also. If I have a spring, an object is connected with a spring, here is an object connected with the spring. When you pull down the spring, this is my reference level. Okay, this is my reference level. When I pull down the spring, what will happen? In case 2, we can see when I pull down the spring, object is coming down. When I release it, it will move up. Such a motion is called up and down motion. Yes, this object is performing oscillatory motion. This object is performing oscillatory motion. In this case, I have considered a vertical motion. In this case, I have considered a vertical motion. Similar such figure, same figure could be drawn horizontally also. In horizontal, a block is there. Block will move to and fro motion. आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है from the mean position. इस केस में क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर mean position पे आ रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, mean position पे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है. Such a type of motion are called oscillatory motion. आप खैर समझिए, आपको पीडीएफ मिल ही रही है, पर पीडीएफ जो नोट्स मिलेंगी उसमें आप खास डेफिनेशंस दी हुई है. आप जब लेक्चर नोट्स कॉपी कर रहे होंगे तो डेफिनेशंस विद फिगर इस प्रकार से लिखनी है आपको. ऑसिलेटरी मोशन डेफिनेशन लिखिए, फिगर ड्रॉ करिए. सर्कुलर मोशन डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन आ रही है आपको पीडीएफ में. सर्कुलर मोशन डेफिनेशन विद फिगर. रोटेशनल मोशन डेफिनेशन. फैन अच्छे से आप ड्रॉ कर लीजिएगा. आई होप योर ड्राइंग इज गुड. Yes, that is definition, title, definition and figure. Now let's see some more definitions. Chalo students, let's see two type of quantities. First is scalar quantities. Next is vector quantities. जो आप ऑलरेडी बचपन में पढ़ के आ रहे हैं फ्रॉम 7th 8th 9th स्टैंडर्ड, शायद 10th में पढ़ा हो. पर अभी फिर से देख लेते हैं व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज, नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटीज. बहुत ही सिंपल है. इन स्केलर क्वांटिटीज, the quantities which have fixed magnitude but
they don't have direction. While in vector quantities, magnitude and direction both are required for the specification. Scalar quantities, they have magnitude but no direction. While in this, they require both magnitude and direction for specification. Yes, I'll give some examples of the quantities. Which are such quantities? In scalar quantities, for example, we have length, mass, time, distance, all such quantities are considered in a scalar quantities. While in vector quantities, the quantities which require magnitude and direction, there are, for example, first example is displacement. What is actually displacement? We'll understand in the next sessions. Then only we'll be getting it. Displacement, velocity, acceleration, force, torque, etc. ओके, तो बच्चों मैं आपको जो बेसिक दो डेफिनेशन देखी, हमने समझी डेफिनेशंस। मैं आपको जो रेफरेंस बुक्स में से, मैं आपको प्रदीप रेफरेंस बुक है जो मैं यूज कर रहा हूं, उसके फोटो कॉपीज आपको भेजूंगा। ओके, उसमें से आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, खास समझिएगा, उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ है। हर एक डेफिनेशन के बाद काफी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। टाइटल लिखिए मैकेनिक्स डेफिनेशन, देन स्टैटिक्स शॉर्ट में डेफिनेशन लिखिए, फिगर, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स जस्ट डेफिनेशन। फिर हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मोशन, 3 टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर। फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ओके, और ट्रांसलेटरल। टाइटल रेक्टिलिनियर लिखिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए और फिगर अटैच करिए। फिगर आपको पीडीएफ में मिल रहा है। नेक्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, पुट द टाइटल, डेफिनेशन, फिगर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, देन वी हैव सीन ऑसिलेटरी मोशन। एट द लास्ट वी हैव सीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिफरेंस फॉर्म में लिखे, कोई बात नहीं है। सो इन नेक्स्ट सेशन विल सी अपकमिंग टॉपिक्स जो आज हमने देखा। खास आपकी लेक्चर नोट्स में कॉपी डाउन करिएगा, 1 टाइम इन क्लास वर्क, 1 टाइम इन होमवर्क। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे, टेक केयर।